Find initial value of s plus 1 upon s plus 4. S square plus 4s plus 1. So we have to find the initial value of this. S plus 1 upon s square plus 4s plus 1. Okay, use the formula. So by formula, initial value equal to x of 0 equal to limit s tends to infinity s into x of s. Now here is the important step. Put the value of x of s here. So this becomes limit s tends to infinity s into x of s value is s plus 1 upon s square plus 4s plus 1. Okay, multiply with s in the numerator. So this becomes limit s tends to infinity s square plus s divided by s square plus 4s plus 1. अब एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप डायरेक्टली इंफिनिटी डाल देंगे सो दिस विल बी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, जो कि गलत है. इट इज रॉन्ग. Okay, so whenever the limits are infinity, whenever the limit tends to infinity, so you have to see the highest power of s. You have to see the highest power of s. So highest power of s is s square. So you should divide every term by s square. So divide by s square. This is a very IMP step. Divide by s square. So s square upon s square 1. Right, s square upon s square 1. S upon s square 1 by s. S square upon s square 1. 4s upon s square 4 by s. 1 upon s square 1 by s square. Now you substitute the limit. And when you are substituting the value, don't write limit. जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तब लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है. सो 1 प्लस 1 बाय इंफिनिटी 1 प्लस 4 बाय इंफिनिटी प्लस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर. So this becomes 1 plus 0, 1 plus 0 plus 0. So answer is 1. Answer for this question is 1. Okay. So initial value formula is x of 0 equal to limit s tends to infinity s into x of s. So in place of x of s given in the question substitute. Then multiply with this s. So 2s multiply करो. So 2s into s 2s square. ओके इधर थोड़ा गलती कर दिया मैंने, यहाँ पे 2s plus 1 is 2s, s नहीं आएगा यहाँ पे 2s आएगा. ओके नो प्रॉब्लम, बट दैट डजंट चेंज द आंसर. हियर इज 2s. ओके डिवाइडेड बाय s square plus 4s plus 7. So we can see here highest power is s square. हाईएस्ट पावर इज s square. हाईएस्ट पावर दोनों में देखना आपको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर में s क्यूब है, न्यूमरेटर में s स्क्वायर है, तो अब हम s क्यूब से डिवाइड करेंगे. टोटल इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है दैट वी हैव टू सी. सो हाईएस्ट पावर इज s स्क्वायर. सो डिवाइड बाय s स्क्वायर. एवरी टर्म यू डिवाइड बाय s स्क्वायर. सो 2s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर 4s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय s स्क्वायर. ओके सो s स्क्वायर कैंसल. 1 by s here s square cancel. Here 1s get cancel out, and here it is 7 by s square. Now when you are substituting value, don't write limit s tends to infinity. अब value substitute करो. So 2 plus 1 by infinity plus divided by 1 plus 4 by infinity plus 7 by infinity. 1 upon infinity is 0. 1 upon infinity is 0.
So 2 plus 0 divided by 1 plus 0 plus 0, answer is 2. So here only you get the answer. Initial value is 2. Now if I look at the option, my answer is option B. Okay. Then about final value. The formula is limit s tends to 0, s into x of s. Again, one more thing that in exam students are confused with the formula. Initial value को जगह final value calculate करते हैं, final value की जगह initial value calculate करते हैं. So you always remember that we are finding initial value, final value of time. When time is infinity, s will be 0 because of inverse relationship. Time is infinity, s will be 0 because of inverse relationship. Okay. Then first multiply and then put the limit. So 0 plus 0 divided by 0 plus 0 plus 7. So answer is 0. So final value is 0. So final value means t equal to infinity, मतलब long time, और long time का मतलब होता है steady state. Long time मतलब steady state. Yes, A is the answer. So for this question, A is the answer. Steady state. It is used to find the steady state value. Okay, this we have already solved in the last class. A u of t is just indicating that t equal to 0. U of t यहाँ पे सिर्फ दिखा रहा है आपको that condition is t equal to t greater than equal to 0. बाकी ये यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? फ्रीक्वेंसी शिफ्ट प्रॉपर्टी. None of this. For this question number 4, answer is none of this. How your answer is none of this? Question number 4. I am talking about question number 4. How you are getting answer as none of these? U of t is just indicating t greater than equal to 0. So what is Laplace transform of e raised to alpha t cos alpha t? Okay, cos alpha t is s upon s square plus alpha square. Cos alpha t का Laplace s upon s square plus alpha square. Cos alpha t is Laplace transform s upon s square plus alpha square. Then here we are multiplying with e raised to alpha t. So my signal is multiplied with exponential. Signal is multiplied with exponential. That means we have to use frequency shift property. We have to use frequency shift property. And in frequency shift property, अगर exponential को plus sign है, तो frequency shift में minus sign आता. So that's why answer is option A. This we have already solved in the last class. So देखो options s minus alpha, s plus alpha. तो एग्जाम में जाके यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. ऑप्शन है कि ऑप्शन बी है. There should not be any confusion. In case of frequency shift property, we have opposite sign. अगर exponential को plus sign है, तो x of s minus alpha होता. So the answer for this question is option A. Okay. Next question number 5. Question number 5. I hope it is visible. If Laplace f of t equal to omega upon s square plus omega square, if Laplace f of t equal to omega upon s square plus omega square, then the value of limit t tends to infinity f of t is. मतलब वो क्या पूछ रहे हैं आपसे? फाइनल वैल्यू. वो आपसे क्या पूछ रहे हैं? लिमिट t tends to infinity means final value, steady state, right? Limit t tends to infinity means final value. और ये किसका लैप्लास है? ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर साइन फंक्शन का. दिस इज द लैप्लास ऑफ साइन फंक्शन. साइन ओमेगा टी का लैप्लास है एस ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इज द लैप्लास ऑफ साइन ओमेगा टी. So your answer is cannot be determined. Final value theorem cannot be determined.
क्योंकि cos ओमेगा sin इंफिनिटी की वैल्यू वी डोंट नो. आंसर इज कैनॉट बी डिटरमाइंड. ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ. आपको ओमेगा अपॉन AC स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट मीन साइन ओमेगा टी दिया हुआ है. ठीक है, और फाइनल वैल्यू पूछ रहे साइन ओमेगा टी साइन इंफिनिटी की वैल्यू हमको पता नहीं है, सो कैन नॉट बी डिटरमाइंड इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. टेल मी इन द चैट बॉक्स क्विकली विच प्रॉपर्टी t minus capital T, small t minus capital T, where capital T is some constant. Capital T is some time shift. Yes, time shifting property, time shift property. तो एक डोमेन में शिफ्टिंग, दूसरे डोमेन में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन. सो वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर एलिमिनेटेड. नोट, बिकॉज इन ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी देयर इज नो exponential multiplication to our f of s. Now in case of time shifting we don't have sign change, same sign. So यहाँ पे minus t है तो यहाँ पे भी minus st आएगा. So correct answer is option B. Correct answer is option B. In case of time shift, t minus मतलब time shift, no sign change, same sign. Frequency shift, s minus, frequency का variable s है, s minus, then we have sign change. So these small key points you should remember so as to avoid any confusion in these two answer. So correct answer is option B. Okay, so now I think you can try this question number 8 based on initial value, final value. Question number 9. If the Laplace transform of a signal y of t is y of s equal to 1 upon s minus 1, then its final value is. Don't use formula. Whenever one of the option is not defined, unbounded, cannot be determined, so you have to think. ये गलती हो जाती है स्टूडेंट से एग्जाम में कि वो ऑप्शन ठीक से नहीं देखते. जब कभी भी एक आधा ऑप्शन अनबाउंडेड, नॉट डिफाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऐसा है तो आपको थोड़ा सोचना है. अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करोगे डेफिनेटली यू विल गेट सम आंसर. इफ यू आर यूजिंग द फॉर्मूला यू विल गेट सम आंसर, but as the pole is on the RHS, so we cannot use the final value, and answer is unbounded. Answer is unbounded. Answer is unbounded. Okay, again question number 8. Consider the function f of t having Laplace transform omega 0 upon s square plus omega 0 square. Consider the function f of t having Laplace transform omega 0 upon s square plus omega 0 square. The final value of f of t would be, and these are the 4 options. f of t क्या रहेगा? ये किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म है? ओमेगा 0 upon s square plus omega 0 square. Omega naught is the variable, right? Omega naught is variable, that constant variable. So a upon s square plus a square. So that means it is the Laplace of sine function. तो साइन इंफिनिटी पे क्या रहता? साइन इंफिनिटी पे क्या रहता? पता नहीं, वो 1 और -1 के बीच में रहता. That is between 1 and -1. So your answer is option C.